So देखो earthquake. So it is an earthquake. You can say it is a sudden vibration. It is a sudden vibration set on Earth's surface because of tectonic activity. So there are tectonic activity हुए like जो plate move करंती, plate तले converge करंती, plate तले diverge करंती, कि plate तले slide past करंती, तो से माने seismic wave create करंती, जोटा जाएंगे कौन कोई earthquake create करे. So it is simple a sudden vibration set on Earth's surface because of tectonic movement or tectonic activity. So this tectonic activity or tectonic movement, it produce seismic waves. These seismic waves that travel through the earth crust or travel through the earth lithosphere part. So this when travel करते they produce destruction. ताको कुआ जाए कौन earthquake. So बहुत quick way, sudden way, बहुत कम टाइम पर्यंत सेटा तुमरा exist करे but destruction करे. तो seismic wave रे जितने भी wave हम already discuss कर चुके हैं internal structure of earth रे. So from which surface wave जोटा से L wave और R wave ता भितरु जोटा log wave थाए it is the cause for destruction. आज को destruction हुई. So log wave रो longer wavelength, low frequency था. So and it travel at the crustal region or you can say at the outer skin of the earth. So when it will travel, it produces or it destroy structure on the upper surface of the earth. तुम्हारा building हो कि कौन सी तुम्हारा कि fracture create करेगा, ये सब things तुम्हारा road break करेगा, ये सब जिनसे तुम्हारा log wave जो हुए. So among all the seismic wave, this L wave is the cause of destruction during earthquake. So seismic wave विषय तुम्हें already पढ़ाई जी, तो मैं सेटा भी इठी मेंशन करी, मतलब earthquake लिखियो. टर्मिनोलॉजी तो जोटी तुम्हारा प्लेट ब्रेक करती बा कोनोसी तुम्हारा तुम्हें टेक्टोनिक एक्टिविटी को जहाँ थ्रू रे तुम्हारा एठी एटा को हम कहबे फॉल्ट जो प्रोड्यूस हुए जरूरी गोटे तुम्हारा पर्टिकुलर रॉक सेटा दी खंड है ब्रेक कर छियो. सो दैट इज कॉल्ड योर फॉल्ट. सो जोटी फॉल्ट हुए से जगह रे तुम्हारा अर्थक्वेक जनरेट हुए. जो जगह रे अर्थक्वेक जनरेट हुए दैट इज कॉल्ड योर फोकस. ता कोनती फोकस. इट्स द पॉइंट of origin of earthquake like present below the surface of earth. Below the surface को तुम्हें गोटे टर्म रे कहि परिबो सब सरफेस. below the surface को हम कहबे सब सरफेस, below the surface. So below the surface जो point रे earthquake generate हुए ताको हुआ जाए focus. So this point is our focus. Then vertically above there is a point on the surface that is called your epicenter. So it is a point on the surface vertically above the focus. So focus to ठीक vertically above हमें जिपा surface ऊपर जो point पाइबा ताको है हमें epicenter. So focus is the point where earthquake originates. It is present below the surface, just above the
vertically above the surface, the point is called as your epicenter. So when earthquake will generate, we will travel from the focus outward. Focus ru outward move kariba wave pura. Then it will travel through the earth crust. Then say it will produce destruction. Suppose आमे कि कोनोसी तुमरा कि पोखर रे तुमे टेका पके देला तो सेटु चुकु कोन बट जो पॉइंट रे पडुची तुमे पत्थर पकेबो से पॉइंट रू सब डायरेक्शन को वेव पूरा स्कैटर्ड करबो मूव करिवो. So a point तुम्हारा wave पूरा gradually outward move करछो. So ता अनुसारे we can also define two terms. One is isoseismal line. So it is the line joining point of equal intensity. तो ये अर्थक्वेक हुए जो जगार तुम अर्थक्वेक होइथिबो से जगार अधिक डिस्ट्रक्शन हबो. जेते सेटु तुमे दूरे दूरे जीवो सेते डिस्ट्रक्शन अमाउंट कमी जाय. सपोज धर कि अर्थक्वेक नेपाल रे हला कि दिल्ली रे हला कि इंडोनेशिया रे हला हमें फील करी. बट सेठी जेति की डिस्ट्रक्शन हबो आमा पाखरे सेति की डिस्ट्रक्शन हबोनी. वी आर अवे फ्रॉम दैट. ता माने सेंटर रो जेते तुमे अवे जीवो सेते इंटेंसिटी माने केते अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होची. कि बिल्डिंग भांगी गला कि बिल्डिंग रे खाली गोटे फ्रैक्चर हैला कि रोड पूरा कि फ्रैक्चर प्रोड्यूस हैला तो से अनुसार तुम इंटेंसिटी मेजर करा जाए केते बड़ बिल्डिंग भांगीबो केते प्रॉपर्टी लॉस हो ता ऊपर. तो इंटेंसिटी अर्थक्वेक रू तुमे पर्टिकुलर गोटे डिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन गोटे डिस्टेंस तुम ऑल डायरेक्शन रे यू विल गेट सिमिलर इंटेंसिटी. सपोज ये जो लाइन आम टाणी आर सब जगार तुम्हें इक्वल इंटेंसिटी पाइपर. तो जदि गोटे लाइन दैट जॉइंस पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी लाइक दिस एटा होची पॉइंट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी. सो इट इज कॉल्ड एज योर आइसोसेइस्मल लाइन. तो कोन कहजिवो आइसोसेइस्मल लाइन. सो लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इट इज कॉल्ड एज योर आइसोसेइस्मल लाइन. देन अनदर इज को होमोसेइस्मल लाइन. Homoseismal line. So homoseismal line it is a line joining points where earthquake waves arise at same time. Suppose तुम्हें ये तो earthquake generate हला, so it will take the 5 second. After 5 second wave जो जगह रे पहुंची थी वो सी जगह को तुम्हें ती join करिवो कने सब डायरेक्शन हो जीवो. 5 second तुम टाइम दिलो से केते रे बाट ट्रैवल कला सब डायरेक्शन. सो से टाइम रे 5 सेकंड पर अर्थक्वेक जो पॉइंट को टच करथबो ताकू जॉइन कला में जो लाइन पाइबा ताकू पाइबा होमोसेइस्मल लाइन. सो मोस्टली होमोसेइस्मल लाइन कोइंसाइड विथ द आइसोसेइस्मल लाइन. सो पॉइंट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी और पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक वेव अराइव एट सेम टाइम प्राय सेम से होता है. दीज आर कॉल्ड एज मोर आइसोसेइस्मल लाइन एंड होमोसेइस्मल लाइन. सो दिस इज योर फोकस. इट इज अ पॉइंट बिलो द earth surface where earthquake generated. Epicenter it is the point vertically above the focus on the surface. Then isoseismal line to the line joining point of equal intensity. Then homoseismal line joining points where earthquake waves arrive at same time. When it comes to causes of earthquake, so there are various causes of earthquake, or you can say there are various causes that generate seismic waves. From which tectonic causes is important. Tectonic causes. So the tectonic causes of earthquake is given by scientists by a theory called elastic rebound theory. It is given by H.F. Reid. तो H.F. Reid scientist से देले टेक्टोनिक कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक ता थ्योरी ताको थ्योरी को जाय कोन इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी. इट इज कॉल्ड इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी. सो व्हाट इज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी? सो व्हेन अ रॉक बॉडी it is in stressed condition. যদি গোটা রক বডি তুমি কম্প্রেস করে রাখছো
बा स्ट्रेस कर रख। यू कैन थिंक ऑफ ए स्टिक, गोटे तुम बाड़ी आण, तुम बेंड करने को चेष्टा कर, तुम यदि कंटिन्यूअसली बेंड करवा, जो भाई गोटे रॉक बॉडी को आम कंटिन्यूअसली कंप्रेसिव फोर्स दौरान स्ट्रेस दौरान, यदि आम स्ट्रेस दौरान सी रमें प्रेसराइज कर भितर एनर्जी बिल्ड हुई, कौन एनर्जी बिल्ड हो, बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन में सी तुम यदि कंटिन्यू कर टू अप्लाई स्ट्रेस, गोटे टाइम आसो इट विल ब्रेक, से कौन ब्रेक हो आम कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिवली स्ट्रेस अप्लाई कर गोटे टाइम ब्रेक होगा, ब्रेक है तार जहाँ एनर्जी स्टोर होता कंप्रेशन जी तुम स्ट्रेस थिला इट विल रिलीज एज सेस्मिक वेव, सेटा केमती रिलीज हम सेस्मिक वेव थ्रू रे रिलीज हम। सो दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। तो जदि तुम्हें गोटे कौन रॉक बॉडी इट इज इन स्ट्रेस कंडीशन एंड यू कंटिन्यू टू अप्लाई स्ट्रेस ऑन दैट रॉक, देन इट विल बेंड, फास्ट कौन हम बेंड हम, बेंड है इट विल रीच इट्स यील्ड पॉइंट। जो भाई कौन भी ब्रिटिल मटेरियल जो थाए, ब्रिटिल मटेरियल आम स्ट्रेस दिखती किसी बेंड हम, तापर यील्ड पॉइंट तार जो यील्ड स्ट्रेस कंडीशन अच्छे तापर सी कंप्लीटली ब्रेक कर फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो। तो जो फ्रैक्चर प्रोड्यूस हो गोटे जिन बेंड हो, सपोज धर आम बाड़ी को जो भाई बेंड करते गोटे टाइम से भांगी जो तुम्हें किसी साउंड बाहर को तुम हाथ को किसी वाइब्रेशन फील हम, तो से जो साउंड बाहर कि तुम हाथ को जो वाइब्रेशन फील है तो सेटा कौट आसो, इट कम्स फ्रॉम द स्ट्रेस दैट स्टोर्ड विद इन दैट स्टिक। ये से भाई गोटे रॉक को बेंड कर तो ता भीतर जी एनर्जी स्टोर होती स्ट्रेस स्टोर होती से रॉकटा ब्रेक कर जाउची, ऑल द एनर्जी इज रिलीज्ड, सब एनर्जी पूरा कौन हो रिलीज हो जाउची आज सेस्मिक वेव। सो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहूँ जदि इफ वी कंटिन्यू टू अप्लाई stress to a rock body, then it will build energy within it, so when it will break it will release the energy as seismic wave which causes the earthquake। तो जेहेतु आमर earthquake पूरा गोटे ब्रेकिंग थिंग इनवॉल्व होची, गोटे कौन जिस ब्रेक कर, तुम धर बिस्किट आण ब्रेक कर भांगी, तुम यदि गोटे वायर आण ब्रेक करने को चेष्टा कर स्ट्रेस दब से बेंड हो रही वायर रे कौन हम बेंड हो रही, तुम गोटे स्टिक आण बिस्किट आण बेंड करे से ब्रेक कर, जिते पर्यटन गोटे जिन ब्रेक है एनर्जी रिलीज हम ना। तो से कौन हुए नॉर्मली अर्थक्वेक पूरा ब्रिटिल रीजन ही प्रोड्यूस हो पाए, जो जगह ब्रिटिल थी से जगह ही प्रोड्यूस हो पार, अदरवाइज से कौन प्रोड्यूस हो पार ना। तुम्हें कौन डक्टाइल रीजन तुम अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो पार ना, से ग्रेटर डेप्थ पर्यटन अर्थक्वेक पाइबनी, गोटे जगह पाइब खाली जो जगह ग्रेटर डेप्थ पर्यटन ब्रिटिल अच्छे, अदरवाइज तुम्हें कौन जगह अर्थक्वेक पाइब ना। सपोज कि आम जब कनसीडर करवा मोर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री यहाँ कौन एमती मुव हो, तो गोटे टाइम रे कौन हुए यहाँ तो ये स्मूथर नुहे ना, ये पूरा स्मूथ नुहे ना जे पूरा इजिली मुव हो पड़े, गोटे टाइम रे कौन हम ये मुवमेंटा ब्लॉक हो जाए, किंतु एक टेंडेंसी कौन मुव हो, गोटे टाइम रे जिते तुम फोर्सटा एक्सीड कर जो फोर्सटा को ब्लॉक करुच्ची मुव करने, सपोज धर कि दुईटा जिनस तुम्हें कि कौन जिन को टाणी काणुच गोटे जगह से अटकी जीव माने से फ्रिक्शन से मिलूनी मुव करने, आबुड़ा खाबुड़ा जगह अच्छे तुम कौन जिन टाणी काणुच अटकी जीव ना, तुम जोर लगे टाण से खसब से सडन किसी बाट आग को मुव कर, ये भी से भाया हम गोटे टाइम ये अटकी गला तापर टेंडेंसी मुव करुवे, तो ये जो जी फोर्स द्वारा मैंने ब्लॉक होती ये मुव करुवे
से माने चेष्टा करते मूव करिया को से मूवमेंट फोर्स जतले ब्लॉक फोर्स रु अधिक होई जिवो मूव कर जिवो ये तले मूव कर जिवो सडनली सेतले सेस्मिक वेव क्रिएट हो कहीं ना ये तले ब्लॉक थिले सेतले माने एनर्जी बिल्ड कले किछि तापर सडनली से एनर्जी पूरा रिलीज हो एट आज सेस्मिक वेव कि तुमरो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री तले प्लेट ब्रेक करूछ प्लेटा धीरे 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 करी गोटे टाइम रे ब्रेक हो जो ब्रेक हो सेतबेले सी सेस्मिक वेव जनरेट कर कि ट्रांसफॉर्म रे तुमरो एमिति एतले ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होउची गोटे टाइम रे कौन हो सेटा ब्लॉक हो जाए तापरे सडन मूवमेंट करे तो सेइटु तुमे जानि परियो कि कोनोसी जगह रे जदी तुमरो ब्लॉक होउची मूवमेंट बा तुमरो स्ट्रेस बिल्ड होउची तो से जगह रे जतले जे से स्ट्रेस टा रिलीज हबो it will release as earthquake waves so those earthquake waves will produce the destruction तादर जोटा L wave हवा सेटा destruction करियो so this is the tectonic causes of earthquake and non tectonic causes there are various causes of non tectonics volcano can be non tectonic causes जोटी volcano पर nearby region है तुम्हें किसी earthquake feel करियो even if भी तुम्हें जोटी landslide होची landslide रे भी तुम्हें earthquake generate हुए कि हमरो माइनिंग रीजन ने जोटी ब्लास्टिंग हुए माइनिंग एक्सकावेशन पाई ब्लास्टिंग हुए से जगह तुम अर्थक्वेक फील कर परियो तुम ट्रक जाउतले भी तुम रास्ता साइड रे छिड़ा आइतले ताले भी तुम किछटा वाइब्रेशन फील कर परियो तो जे कोनोसी वे तुम वाइब्रेशन फील कर परियो नॉन टेक्टोनिक कॉजेस तो आर नॉट मच इंपोर्टेंट से माने बेसी अर्थक्वेक जनरेट करंतिनी बहुत लेस तुमर इंटेंसिटी रो करंते जोटा कि कोनोसी डिस्ट्रक्शन सहित एसोसिएटेड न थाए किंतु टेक्टोनिक कॉजेस इज द ओनली कॉजेस जो उतरे कि तुम्हारा डिस्ट्रक्शन हो कि हमर इंडियन प्लेट धर हिमालयन रीजन रे इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट कोन सो एडी कोलिजन हिचंती तो सेटा बेले बेले कोन हुए मूव कर जाए सेठी नेपाल रे सेतमे अर्थक्वेक हेतला है कि इंडोनेशिया रे जमे देखियो बहुत अर्थक्वेक हुए जापान रे सुनतियो बहुत अर्थक्वेक हुए काना जापान होची गोटे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री रे अछि तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तमे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक पाइ काना एटी मूवमेंट होची ता सहित तुम इंडोनेशिया रीजन में भी से कन्वर्जेंट अच्छे से तुम बहुत अर्थक्वेक हुए और ओशन भितर जदि होटा सुनामी कर दो कौन कर ये जो वेव आसो से ओशन वेव को बहुत लार्जर वेव प्रोड्यूस करो से टाइम रे तो सेठी सुनामी ही जाए सुनामी रो कॉज होची भी या इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक सो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक सो टाइप्स फर्स्ट ऑन द basis of depth of focus on the basis of depth of focus so on the basis of depth of focus we have these four types of earthquake one is surface earthquake where the depth of focus it is less than 10 km. If the depth of focus is less than 10 km, it is called as a surface earthquake. Shallow focus earthquake, if the depth is between 10 to 50 km, it is called your shallow focus earthquake. Then intermediate earthquake, it will be 50 to 300 km. 50 to 300 km. Then deep focus earthquake, it is greater than 300 km. So the surface earthquake generally it is produced by these smaller activity, landslide or volcano will find surface earthquake. So shallow focus earthquake is generally found in divergent plate boundary. So shallow focus earthquake it is associated with divergent plate boundary. So it is divergent plate boundary. Okay, and in convergent plate boundary you will find all type of earthquake. In convergent plate boundary you will find all type of earthquake. So the earthquakes is distributed along this your subducted plate. This distributed along the subducted plate. So this distribution zone it is called as your Benioff zone. Benioff zone or Benioff earthquake distribution zone. So this is the only place you will find deep focus earthquake because deep focus earthquake तुम्हें 300 above मिलेगा 300 mostly तुम्हें 500 एजिंग पाइबो
सो एते डेप्थ पर्यंत कहीं लिथोस्फियर पर तुम आस्थनोस्फियर केतले स्टार्ट हो 100 किलोमीटर पर सो सेटा डक्टाइल मैटर किंतु ये जब तुम 500 पर पाउच अर्थक्वेक तामाने कोनोसी जो प्लेस रे ब्रिटल मेटल कैन अवेलेबल अप टू दिस मच डेप्थ सेटा होची ओनली सबडक्शन जोन ने जोटी प्लेटटा सबडक्ट करथबो से जगह रे ही तुम ग्रेटर डेप्थ पहुंचा ब्रिटल मेटल पाइब अदरवाइज में कोठी पाइब नाही so that deep focus earthquake is only found in convergent plate boundary so तुम्हें deep focus earthquake is only found in convergent plate boundary तो देखो जोटी convergent plate boundary है ना सेठी बहुत earthquake में पाइब সেটা হলো তোমার টাইপস অফ আর্থকুয়েক think also earthquake measurement so the earthquake it is measured by instrument called seismograph it is the measurement instrument एबा जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट गुड कहै छै सेismograph रे जहां मेजर करा जाय जहां ग्राफ बाहर ता ना होछि seismogram seismogram होछि the graph seismograph is the instrument उल्टा right instrument नाम होछि कोन seismograph त माने सपोज धर एबला गोटे पेंसिल थिबा एटा एमती सस्पेंड हितो गोटे कोनोसी थिंग रे ता आगे गोटे पेपर थिबा एमती जदि अर्थक्वेक हबा से एमती वाइब्रेट करियो जो जगह अधिक वाइब्रेट करियो से जानियो से जगह कोन अर्थक्वेक हिच तो ये जो ग्राफटा बाहर ताको कहते सेस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट ना होची सेस्मोग्राफ राइट सिंपल इंस्ट्रूमेंट खाली मोर कि कोन पेंसिल ही गोटे सब तुमर सस्पेंड हेतिबो गोटे पेपर थिबो ता पर एमति एमति होतो जदि अधिक वाइब्रेट हैला ताले से अनुसार ग्राफटा तुम जानिबो जे ए जगह रे अर्थक्वेक हैला तो से केते ए जो एटा को तुम एम्प्लीट्यूड कहि परबो केते एम्प्लीट्यूड रो प्रोड्यूस कला से अनुसार तुम जानि परबो केते इंटेंसिटी बा अर्थक्वेक केते बड़ अर्थक्वेक है ना सो अर्थक्वेक रो कि एटा लिखि छला इंस्ट्रूमेंट so earthquake it is recorded on this instrument so we use two parameter to measure the earthquake to measure the intensity or to measure the energy level of the earthquake we use two parameter one is called earthquake intensity another is called earthquake magnitude गोटे अर्थक्वेक इंटेंसिटी गोटे अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इटा बहुत इंपोर्टेंट जिनस भल से मन रखियो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू तुम जेकोसी एंट्रेंस एग्जाम रे ई टाइप रो क्वेश्चंस बडे पाइबो डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड बहुत टाइम रे क्वेश्चन पाइबो सो फर्स्ट देखिबा व्हाट इज अर्थक्वेक इंटेंसिटी so simple earthquake intensity it measures the degree of destruction so degree of destruction माने you can say amount of property loss केते amount of property loss है जी ता so there are two scale we use to determine the earthquake intensity one is called Rossi-Forel scale another is called Mercalli scale these are two earthquake intensity scale केते इंटेंसिटी तुम कहि दउ छै ना एटा एमती किछि तुम लॉन्ग क्वेश्चन लिखिया मन रखियो एमती एंट्रेंस पार्ट रे किछि पड़े थोड़ा Rossi-Forel स्केल अच्छी सेटा imperceptible recorded by sensitive instrument only बहुत कम है तो रोमानिक आयरन इंडिकेट करा जदि तुम कहबो रोमानिक 2
ताले फीबली हबो जोटा कि रिकॉर्डेड बाय सेस्मोग्राफ रोमाटिक 3 जो 3 नंबर को पळाइछो सेते बेले वी कैन सेंस दैट आमे सेटा को एक्सपीरियंस करि परबो अर्थक्वेक रोमानिक 3 पर्यंत रोमानिक 4 हले कि स्लाइटली तो कोनती रोमानिक 4 हले स्लाइटली तो जोटा कि तुमे चालुथला बेले भी जानि परबो हां किछटा वाइब्रेट कला वाइब्रेशन तुमे बेले बेले तुमे देखो अर्थक्वेक हला बेले आमे जानि परंते बसुथवा हठात किछ गोटे होउथो तुमे जानि परिबे जोतले कि बहुत कम हुए हैना तो सेमती सब स्लाइट वीक मॉडरेट एम सब अच्छे है ना स्ट्रांग वेरी स्ट्रांग सीवियर डिस्ट्रक्टिव एमती नहीं कि रोमानिक आई ठू नहीं कि रोमानिक एक्स पर्यंत अच्छे ना 10 पर्यंत अच्छे सेमती मर्काली सेल भी से भाया सेम जिनस सब है को जगह बिल्डिंग भांगिला सीरियस डैमेज है कि बिल्डिंग थर घर अच्छे घर में टिके खाली गोटे फ्रैक्चर है तो सी गोटे इंटेंसिटी पूरा गोटे बड़ फ्रैक्चर हो गला कि कांथ फाटीगला सी गोटे इंटेंसिटी पूरा घरटा ही भांगला तो सी बहुत अधिक इंटेंसिटी रही तो से अनुसार तुम इंटेंसिटी तुम्हें खाली मन रख रोसिफोरल स्केल और मर्काली स्केल दुईटा टाइप इंटेंसिटी स्केल अच्छे मोर मेन इंपोर्टेंट जिन हूँ मैग्नीट्यूड आ गोटे जिन लिखि कि अवे फ्रॉम द अर्थक्वेक फोकस जिते आम अवे जावा द इंटेंसिटी डिक्रीजेस इंटेंसिटी कौन डिक्रीज हम क्या इंटेंसिटी it measures the degree of destruction so intensity decreases away from the epicenter or focus then we'll write on earthquake magnitude so earthquake magnitude it calculates or it measures the amount of energy released during earthquake so earthquake time रे केते amount of energy release हैला केते amount of energy release हैला ताकू कोन दिया में magnitude so magnitude it depends upon the amplitude of seismic wave and there are certain calculation किछटा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करा जाए जो जगह अर्थक्वेक क्रिएट हुए से जगह न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कराए कि मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कराए केते एनर्जी बाहरला जहां एनर्जी बाहरला वी एक्सप्रेस दैट इन जूल्स तो जूल रे एक्सप्रेस करा जाए सो एटी तुमरो मेजर होच कोन केते अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हैला सो अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड होची इट ओनली मेजर्ड एट फोकस ओनली फोकस पाखरे तुमरो मैग्नीट्यूड मेजर करा जाय तो मतलब इंटेंसिटी हमें डिफरेंट प्लेस रे मेजर करबा किंतु मैग्नीट्यूड हमें जो प्लेस रे हेची सेही प्लेस रे ही मेजर करबा तो से आम कह जदि गोटे जगह अर्थक्वेक 9 पॉइंट होती आम भी ये कह अर्थक्वेक 9 पॉइंट आम भी 9 पॉइंट जो जगह होती 9 पॉइंट किंतु आम कम इंटेंसिटी फील करवा से अधिक इंटेंसिटी फील करेंगे तो दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट अवे फ्रॉम द फोकस तो मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट अवे फ्रॉम द फोकस मैग्नीट्यूड डज नॉट changes away from focus so focus रो जेते हमें away जिबा बा एपिसेंटर जेते दूर को जिबा मैग्नीट्यूड चेंज होनी मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन which of the following statement is correct earthquake intensity changes away from the epicenter magnitude decreases intensity increases magnitude decreases magnitude increases intensity decreases intensity increases magnitude remain constant कि magnitude decreases intensity remain constant so तुम्हें चूज करो कौन intensity increases magnitude always remain constant so earthquake magnitude calculation ପାଇଁ फॉर्मूला अछि बट से फॉर्मूला तुम कोनोसी लेवल रे भी रिक्वायरमेंट नै ना एमएससी रे अछि ना कोनोसी जगह रे रिक्वायरमेंट हवा नै किछटा अछि मु कहि देबी सेटा सो मैग्नीट्यूड मेजर करिया को हमें डिफरेंट स्केल यूज करंती ताको हमें मैग्नीट्यूड स्केल कहते तदो सबटरो हमर इजियर हला मैग्नीट्यूड स्केल होची रिक्टर स्केल
Richter scale. So Richter scale, it is a magnitude scale. So it contains number from 1 to 9. So 1 to 9 पर्यंत तुम्हारा नंबर अच्छे एमती 1 2 3 4 5 मैग्नीट्यूड 6 7 8 9 मैग्नीट्यूड एमती ईच मैग्नीट्यूड जितने इंक्रीज कर तुम कहले गोटे अर्थक्वेक 1 मैग्नीट्यूड अच्छी गोटे अर्थक्वेक 2 मैग्नीट्यूड अच्छी तो 1 मैग्नीट्यूड जदि 10 सेंटीमीटर एम्प्लीट्यूड अच्छी वेव रो सेस्मिक वेव एम्प्लीट्यूड 10 अच्छी 2 रे सेटा हो 100 राइट 3 बेलू सेटा हो 1000. So in Richter scale amplitude of wave increases 10 times when magnitude increases by 1. यदि मैग्नीट्यूड गोटे बढ़िबा ताले केते 10 टाइम बढ़िबो यदि मैग्नीट्यूड 2 बढ़िबा ताले 100 गुणा बढ़िबो यदि मैग्नीट्यूड 3 बढ़िबा ताले तो केते मैग्नीट्यूड बढ़िबो तुमे एमति कहि परिबो 10 टू द पावर डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड केते एनर्जी इंक्रीज कर केते तुमरो एम्प्लीट्यूड बढ़ुची यदि 1 एम्प्लीट्यूड बढ़ला ताले 10 टाइम्स बढ़िबो यदि 2 डिफरेंस हैला कि मु 1 रो 3 गली ताले मोर केते एम्प्लीट्यूड बढ़िबो 3 - 1 10 टू द 2 100 टाइम्स बढ़िबो कि 1 रो 4 मु जाउ जति 4 - 1 1000 टाइम्स बढ़िबो तो जिते तुमे जीवा जिते एम्प्लीट्यूड तुमरो इंक्रीज करिवो सॉरी जते तुमरो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करिवो जते तुमे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करबो ईच 1 मैग्नीट्यूड इंक्रीज पे 10 टाइम्स इंक्रीज करिवो. So it is a relation between the Richter scale. Then energy also increases. Energy भी तुम्हारा increase करे. So here तुम्हारा in case of Richter scale, we can calculate the energy of the earthquake from the magnitude. Magnitude तुम्हें energy calculate करते हैं. So energy केमती calculate करते हैं log E equal to 4.5 plus 1.5 m. It is a formula to calculate the energy of the earthquake. So log E equal to 4.5 plus 1.5 m. So m is the magnitude. So केते magnitude रो earthquake हेची तादु तुम्हें बाहर कर परिबो केते एनर्जी रिलीज हेची तो हमें देखिबा यदि गोटे एनर्जी हमें इंक्रीज करछंती इफ द एनर्जी विल इंक्रीज बाय 1 सॉरी द मैग्नीट्यूड इज इंक्रीज बाय 1 देन हाउ मच एनर्जी विल चेंज व्हाट इज द रिलेशन यदि log E2 नबा हमें log E2 minus log E1 E1 माने एनर्जी at magnitude 1 E2 माने एनर्जी at magnitude 2 we'll take 4.5 plus 1.5 into 2 minus 4.5 plus 1.5 एमती जो 4.5 कटि जो कटि जो ने रहबा कते 1.5 into 2 हैला पुनी से माइनस हे जो से 1.5 हे जो त माने ये log E2 तो log E2 minus log E1 केते हिजो E2 by E1 हिजो it will be 1.5 तो 1.5 केते हिजो ताले इट इज E2 by E1 हमें करबा it will be 10 to the power 1.5 10 to the power 1.5
So 1.5 हेले एटा इज 10 to the power 3/2. So it will be 31.6. So that means E2 is equal to 31.6 times of E1. So it means 10 to the power 3/2 to the power difference in magnitude. पुणी जिते डिफरेंस हम तुम्हें 31.6 into 2 करिवे. सपोज धर कि you have to remember this formula 10 to the power 3/2 to the power difference in magnitude. यदि magnitude difference हैला केते 2 हे गला ताले 1000 टाइम्स 3 हे गले तार अलगा भारी है ना. तो इठी यदि magnitude will increase by 1, if magnitude will increase by 1, the energy will increase by 31.6 times. Write down. In Richter scale, if the energy, if the magnitude will increase by 1, then the energy will increase by 31.6 times. So this is your Richter scale. So it is used to determine the magnitude, and this how the relation between the numbers of Richter scale. Goes to epicentral distance calculation. तो हमारे इतने अर्थक्वेक जनरेट हुए गोटे जगह रे, जो जगह जनरेट हुए से जगह तो हमारा न था किसी भी तो जानचो को जगह जनरेट हो तो हमारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया रे नियर बाय रीजन रे तुम्हारा कौन था अर्थक्वेक स्टेशंस था. तो सेठी इतने अर्थक्वेक जनरेट हबो से अर्थक्वेक स्टेशन ने ही से रिकॉर्ड हो. तो नॉर्मली कौन सी अर्थक्वेक जोटी सपोज धर कि ए जगह अर्थक्वेक जनरेट हला तो सरफेस रो से ट्रैवल करियो कोठी तो करा seismic station. So the distance between the epicenter and seismic station it is called as epicentral distance. तुम्हारा E2 एतिक रहला कौन epicentral distance. So distance between seismic station and epicenter. तो यदि तुमरो E2 जनरेट हुए अर्थक्वेक देन सब सेismic वेव क्रिएट हेबे. तो एटी P वेव ट्रैवल करिवो, S वेव ट्रैवल करिवो, L वेव ट्रैवल करिवो. तो आगे रिकॉर्ड हबो कि P वेव ना P वेव इज सबटर फास्टेस्ट. सो हम एठी नबा वेलोसिटी ऑफ P वेव एटा, वेलोसिटी ऑफ S वेव एटा. देन एपिसेंट्रल डिस्टेंस रु एपिसेंटर रु सेismic स्टेशन को आसिया पई P वेव जेति टाइम लोजी सेटा नबा TP ता रु नबा TS. तो obviously TS will be greater than TP. VS velocity of S wave होचे स्लो. एतमे TS ता अधिक हबो कारण S wave को अधिक टाइम लागो पहुंचे सेismic स्टेशन को, TP को कम टाइम लागे. आर वेलोसिटी अधिक टाइम कम, आर वेलोसिटी कम टाइम अधिक. एंड डिस्टेंस नै जो हमें एपिसेंट्रल डिस्टेंस नै जो एपिसेंट्रल डिस्टेंस नै जो D. तो एपिसेंट्रल डिस्टेंस बोथ पे सेम हो. वेलोसिटी ऑफ P वेव पे जहां पे एपिसेंट्रल डिस्टेंस आपे भी से है. तो हमें यदि TP बाहर करिवा ताले TP केता हो BP by D राव BP by D सॉरी B by VP D by VP वेलोसिटी इक्वल टू S by T. तो एटा का D by VP TS is D by VS. So if you calculate the time interval between them TS minus TP, जब TS minus TP बाहर करिया ताले D by VS minus D by VP तो एटा नै जो del T तो D कॉमन ही जीवो 1 by VS 1 by VP बाको हम एमती लिख परिबा del T equal to D into VP minus VS by VP into VS. So that's how we can calculate the D. हम पाकर velocity of P wave दरकार थिबो, velocity of S wave थिबो. आउ में केते इंटरवल रिकॉर्ड हम एठी पाइ जबा क्या P wave एति केला तार 1 सेकंड पर कि S टा आसला कि 2 सेकंड पर S टा आसला. दैट इज इंटरवल टाइम. आपरे D हे जिवो
मोर एपिसेंट्रल डिस्टेंस में जानि जो कि को जगार अर्थक्वेकटा जनरेट होइला तो एटा हले एपिसेंट्रल डिस्टेंस हैला कि तो एति हला हमर अर्थक्वेक अब जो डिस्ट्रीब्यूशन अछि अर्थक्वेक रा सेरा हम वोल्केनो रे भी सेही सेम टाइप रो अछि तो एकाथरे गोटे टाइम रे कहि देले तुम सुविधा हो कि वोल्केनो भी तुमर प्लेट बाउंड्री मिले अर्थक्वेक की कोड मिले प्लेट बाउंड्री ही मिले तो सेते सेटा एका सहित कहि